Today I am going to explain and also critically analyze the portrayal of kannaki. kannaki जो है वो बहुत important character है in the book of vanci. kannaki is a legendary tamil वैश्या. वो जो कन्नगी है वो एक लेजेंडरी तमिल वैश्या वुमेन है हु फॉर्म्स द सेंट्रल character of the Tamil epic Silapatikaram 100 to 300 CE. The story reveals how Kannagi took revenge on the Pandyan king of Madurai who had wrongfully put her husband to death by cursing the city. Kovlan, the son of wealthy merchant in Kaveri Pattinam, married Kannagi, a young woman of legendary beauty. They lived together happily in the city of Kaveri Pattinam until Kovlan met the dancer Madhavi and fell in love with her. मतलब एक कॉटिसन होती है माधवी नाम की, कोवलन फिर उसके संग में चला जाता. In his infatuation, he forgot Kannagi. इस इन्फ्लैचुएशन में वो फॉरगॉट कर देता है कन्नगी को एंड ग्रेजुअली स्पेंड ऑल हिज वेल्थ ऑन द डांस. एट लास्ट penniless Copeland realized his mistake and returned back to Carnegie. Their only asset was a previous pair of anklets, Chilambu, hence the name of the epic, filled with the germs which she gave to him willingly. With their as their capital, they went to the city of Madurai, where Kovlan hoped to recomp his fortunes by trade. मतलब ऐसा होता है इस स्टोरी लाइन में कि कोवलन और कर्नगी दो मैरिड कपल होते हैं और ये रहते होते हैं कावेरी पट्टनम में. एक एक टाइम ऐसा होता है कि एक कॉटिसन मिल जाती है कोवलन को माधवी नाम की. भी कोवलन उसके साथ मतलब फैचुएट होके चला जाता है माधवी मतलब वो माधवी के संग में कन्नगी को भूल जाता है वो. पर एट द एंड वो आता है अपनी वाइफ कन्नगी के पास में और फिर बोथ वांटेड टू स्टार्ट देयर लाइफ्स इन द न्यू पॉइंट ऑफ न्यू. No, Copeland also spent all his money, wealth to Madhvi. So he करने की जो होती है वो कोपलन को देती है एंड कहती है कि आप तुम मेरा ये एंकलेट जो है वो बेच दो और जो मनी आएगा उससे हम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करें. दैट्स वाई